अब मैं गुजारिश करता हूँ इरम से कि आप चंद सवालात करें और इरम. Thank you, Falsi Bhai. So, Rehan Bhai, as we know, you are the sound designer and technical advisor of this project, and you have done the music mixing of second CD of Rahat project. So, my question is, how you can describe this music mixing, and what's your feeling and emotion on this one? And another question is, because we are making this CD, so you know that CD is going to obsolete in this world. So how we can transform that CD into different music device? Right now, okay. In relation to your first question, how will this project turn out? Basically, see, this project, I believe it has a very different sound. It has a unique sound. And different blends. It's not just, we are not projecting on just a single genre here. We are taking a diverse sort of range and putting into one masterpiece here. And that's amazing. That you just hardly find that in a lot of projects. Rahat isliye alag hame laga, kafi iske tracks alag lage, because unlike other albums I have mixed and masters in the past, other album mein aap ek similar sort of touch, एक similar sound, एक similar genre होता है, where obviously you have you compose songs in different keys, you have different chord structures, you have different touch with that. But this project has a different vibes. Every single track had a different vibe to it. वो हमको सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ इसमें लगी. That's why I'm emphasizing that I'm calling this a masterpiece, because absolutely this is a masterpiece. बड़े albums हमने यहाँ Hobart में भी couple of albums I have mastered, but I have noticed in those albums that they have a similar feel. So you don't really put a lot of different formats and you don't have to put different hats when you're doing a mixing and mastering. This one, fortunately, and it's really great that I had to put different hats when I am mixing and mastering, because every time जो भी हमने अलग मुख्तलिफ तरह के tracks सुने, I felt a deep connection in my heart. How they were mixed, not mixed, but how they were composed, how they were arranged. It really touched my heart deeply, and that's why I was more inclined कि हम इसको थोड़ा सा ऐसा touch दें personal, where as much as possible वही जो हम लोगों ने फिर से बात की थी, back to the CD format, 44.1 kilohertz का जो होता है, उसमें आप एक पूरा समा आप बांध दें एक single CD में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो बहुत ज़्यादा, it's very essential, because अभी आप CD में 12 tracks हैं, तो वो ट्रैक्स बहुत ज़्यादा essential है कि जब वो कोई सुनता है in your car, mostly people will listen to the CD in their car, in the hi-fi sound system, अपने lounge में सुनेंगे, तो that's what these days CDs are being used. तो basically वो format maximum तरीके से वो उस पे रिले करे वो devices पे, that was my major concern. क्योंकि देखिए frankly speaking आजकल की mixing और mastering की दुनिया ऐसी है कि it's been a while. Actually, last time I mastered a CD was a couple of years ago for a heavy metal band which were from Brisbane, and they came to Hobart. So it was a live performance in a hotel, and they wanted me to capture the live performance and then master the CD, so it will sound like a live/studio touch. तो वो तो हमने CD उनकी मास्टर करी थी. Now these days आपका second question पे जो relating आता है कि कैसे हम लोग उनको transfer करें into different devices. In this case, USB, I would say USB and straight now. Yeah, because most of the car these days, they don't even have the CD device. So USB, or we can put it through Bluetooth or something like that. Absolutely. So then we are talking about MP4 or MP3 format. Yeah. MP3 format is basically what you do is we have a WAV, WAV or AIFF format, जिसे कहते हैं दो. उनका size triple times बड़ा होता है MP3 से. So typically one track you're looking at 150 to 200 megabyte per track.
जब आप इसको कंप्रेस करते हैं MP3 से, so it's unbelievable, 5.1 to 6 megabyte पे वो ट्रैक कंप्रेस हो जाता है. And as a result, MP3 is not my most favorite format, and reason for that is, again, हम लोग उसमें बात करते हैं headroom में, it loses the headroom, it loses a space of listening. So, lekin we don't have much choice rather than creating the MP3 and MP4. And reason for that is that हम लोग के online, आप लोगों ने आजकल, obviously this whole world is inclined to this social media platform and YouTube, live streaming on YouTube and Facebook Live, and now other WhatsApp भी हमने सुना है कि live streaming अभी शुरू करने वाले हैं, where you'll be able to. तो इस live streaming में ये होता है कि we need to make sure कि जो हम लोगों का internet है, आजकल तो सारे लोग NBN use कर रहे हैं, but people who have still, they don't have NBN, they still have NBN 50, which is half of NBN 100, क्योंकि आजकल fastest speed NBN 200 है. Most of our user, including me, we are using NBN 100. तो इसमें हम लोग को make sure करना पड़ता है कि whenever you're doing a live streaming from the CD या MP3, आपको वो format highest bit rate का मतलब ये more headroom, the highest possible quality, internet से online stream करके आता है. अभी जो हम लोग in fact बात कर रहे हैं एक दूसरे से, that's streaming. So our voice is converted to certain bits. In this case, I would say the CD 44.1, because we don't have any interface or sound device connected to our phones. So it's straight going to our phone speakers, to our ears, via our headphones or earphones or whatever, earplugs. So आजकल वैसे जो world है, they are talking about 48, 82.2 and 96 kilohertz की जो bit rate है, उसमें you get the highest possible quality. अगर आप जितने भी YouTube आजकल आप स्ट्रीम अगर करते हैं, आप कोई भी YouTube का वीडियो सुनिए या आप कोई भी नई फिल्म देखिए, मूवी देखिए, बॉलीवुड, any movie, you will notice that they at least have 48 kilohertz of sample rate. They don't use 44.1 kilohertz, which is a CD quality. Now, Rahat project के लिए, because it's 44.1 kilohertz, absolutely, it's an amazing, great quality on a CD, and that's the maximum output we can have on a CD. Convert करने के लिए CD, and I'm sorry I'm taking so much of a time, is my question थोड़ा हम compact कर देते हैं. CD convert करने के लिए what you have to do is you then have to follow a format from a WAV, W-A-V, or AIAA, which is a CD quality, to MP3 or MP4. Compress that. And then वो आप USB करके USB drive पे, you'll be able to convert that or encode the music to the USB hard drive, and then so you can listen to in your cars or stream it online. Thank you, Rehan bhai. It was really interesting talk. Thank you. Pleasure. Rehan, Kimi bhai, you're more than welcome to edit this. मैं राहत साहब की बेटी हूँ, and on behalf of my dad and the family, just wanted to express our very sincere gratitude to you to make this project into such a wonderful one. And जैसे आपने बोला कि आप self-taught हो, मैं अक्सर पापा के शेर ही यूज करती हूँ. वो कहते हैं कि वैसे सब उसकी अनायत है, ये मैं जानता हूँ, हाँ मगर जिंदगी करने का हुनर मेरा है. तो जो हम सबके साथ शेयर किया, और look, unfortunately my mom's not here, but honestly very, very sincere gratefulness and lots of blessings coming your way. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका, and pleasure is all mine. I'm really honored, absolutely honored, and it's an absolute pleasure to work in this project, and I'm sure there are many more to come, and I would love to be a part of that. Shukriya, बहुत. Thank you. थैंक यू. इस सीडी के सिलसिले में है कि आपने जाहिर सी बात है, रशिया से आपका सफर जैसे शुरू हुआ, सिडनी तक आया, और सिडनी के तमाम आर्टिस्टों को आपने एक्नॉलेज भी किया, उनको प्रमोट किया, उनको नर्चर किया, उनको ग्रूम किया, उनको स्टेज पे ले आए, ऑडियंस के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया.
आप बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको मैं भी जानता हूं आपके तनासुब से, जो आपको एक तरह से फादर फिगर समझते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जगह दी और आपने उनको मौका दिया कि वो अपने टैलेंट को आम आवाम तक लेके आए। और आपने अपने इस सफर में बहुत से कंपोजिशन किया आपने, यू हैव डन लॉट्स ऑफ कंपोजिशन। तो व्हाट you have found different in Rahat CD during this composition? Can you explain? जी शुक्रिया फसी भाई, सवाल अच्छा है आपका। असल में ये हमको डिफ़िकल्टी आई, सिंगर्स को लेके डिफ़िकल्टी आई। अगर आप सिंगर्स की एज ग्रुप देखिएगा तो बहुत फ़र्क है। काफ़ी सीनियर सिंगर्स भी हैं और काफ़ी यंगर सिंगर्स भी हैं उसके अंदर। खुद रेहान हिमसेल्फ इज वेरी यंग। तो इनका, लेकिन क्या हुआ इससे कि जो इन्होंने बात शायद इनके इंटरव्यू में आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब मैं तर्ज़े बना के और अपने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन मैंने किए थे क्या करना है, तो इनका एक बहुत काफ़ी मैंने इनसे सलाह ली है और कई बार ये मेरे साथ लाइन पे रहे, फ़ोन पे रहे कि जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन टेक्निकल वो एक डिफिकल्ट पार्ट है। कीबोर्ड पे आप सब बजा लेते हैं, लेकिन उस साउंड को परफेक्टली टोन में सेट करना जो है वो रेहान से काफ़ी मैंने बात करी है और कई सॉफ्टवेयर इसमें ऐसी यूज़ हुई है जिसमें इनका काफ़ी हेल्प मुझे मिली है ऑल द टाइम। तो ये एक यंगर और सीनियर जनरेशन का कम्बिनेशन है। ख़ास तौर से एक बात सर्टनली कहना चाहूँगा इस एपिसोड के लिए कि इसमें 7 ट्रैक तो CD1 में, 8 जो है वो CD2 में। इसके अंदर 4 रियल इंस्ट्रूमेंट मतलब रिकॉर्ड किए गए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। रियल इंस्ट्रूमेंट जैसे सरोद है, ऑस्ट्रेलिया में भी तबला है, फ्लूट है, वायलिन है, और उन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी वो इस्तेमाल हुए। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एक ट्रैक को 15-15, 20-20 बार सुनेंगे, तब आप पकड़ पाएंगे कि ये रियल इंस्ट्रूमेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। ये इसकी खास चीज़ है इस सीडी के अंदर। दूसरी एक इसके अंदर खास सीडी में इसमें चीज़ ये है कि जो आजकल सारी लूप रिकॉर्डिंग होती है ट्रैक्स के ऊपर, मतलब ट्रैक्स है उनके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है, उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मर जाती है। बेसिकली वो सिर्फ ट्रैक की परफॉर्मेंस रहती है। ये मैं तभी बता सकता हूँ जब कभी आप इस मौके पे बात करेंगे, लेकिन इस सीडी के अंदर, इस सीडी के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 ट्रैक ऐसे हैं जो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी हॉल में बैठ के सुन रहे हैं। मतलब काफी ट्रैक इसके अंदर, 2-3 ट्रैक ऐसे आपको महसूस होगा कि स्टूडियो में रिकॉर्डेड है, जैसे बॉलीवुड के गाने होते हैं सब कुछ, लेकिन 3 ट्रैक ऐसे इस सीडी के अंदर हैं जो आपको ये महसूस होगा कि आप किसी कंसर्ट हॉल में बैठ के सुन रहे हैं। इसकी खास चीज है, और ये मेरे ख्याल से शायद कोविड की देन थी। कोविड की वजह से जो हमारा इंटरेक्शन जो था, कुछ मिक्सिंग और मास्टरिंग, रेहान के अलावा इसमें 5 आदमी मिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, और रेहान तो खैर बैकबोन की तरह से थे शुरू से प्रोजेक्ट में, लेकिन जो लोग थे उनके साथ में सारा हमारा जो कॉन्टेक्ट था ये अलग अलग, जैसे आपका स्काइप है, इसी तरह से बहुत से सॉफ्टवेयर है म्यूजिक के जो हमको ये फिजिकली सुनाई देता है कि क्या चीज़ बज रही है, और हम उसको वहीं रोक रहे हैं कि ये नहीं बजना, मुझे इस तरह की तर्ज चाहिए, ये मेरी तर्ज है, यहाँ पे ये चीज़ बजानी। इस तरह से कामों मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसको मैं आगे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ। इस कोविड के दौरान में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत उम्दा फीडबैक मिला। रेहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दूर से आप हाजिर हुए, आपके वक्त का और आपके टैलेंट को सलाम, और उमिला को भी, इरम को भी, और इक्तदार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और सबको आपने इकट्ठा किया। और मैं अब गुजारिश करूंगा इक्तदार भाई से कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। इक्तदार भाई जी, बहुत शुक्रिया हाजरीन का और सारे नाजरीन का, दर्शकगण का।
कि उन्होंने हमें इतनी मुस्तैदी से सुना, और फिर हम अगली कड़ी में आपके साथ हाजिर होंगे सुनिए तो के राहत बोल और बहर सेगमेंट्स में। बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्कार और बहुत बहुत गुड डे।